Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the fifth lecture of this series of CPC. In this lecture, we would start with the jurisdiction of the courts. That is section 9. It is in part 1, suits in general. So they are saying the court shall, subject to the provision herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction. You see the word they use here are, now they are saying the court shall, the word shall. Now shall means what? Mandatory. The court shall, subject to the provisions herein after contained. So they are saying subject to the provisions herein contained. अब herein contained, herein का क्या मतलब हुआ? Herein मतलब CPC, in the CPC. जो प्रोविजन सीपीसी में कंटेंड है. द कोर्ट शैल, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हेयरइन कंटेंड, हैव ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर. shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature. They are using the word jurisdiction to try all suits of a civil nature. The court shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature. Jurisdiction to try all suits. So shall have jurisdiction to try suit of civil nature. तो इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं. Have jurisdiction to try suit of civil nature. All suits, they are also saying of civil nature. Now they are not writing all civil suits. They are saying all suit of civil nature. And then further they are saying accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. So they are creating exceptions also कि जहाँ पर भी ये express और implied bar है, whenever there is express or implied bar, उन cases में कोर्ट का jurisdiction नहीं होगा. The court will not have jurisdiction. So they are creating an exception. Wherever the taking of cognizance by the court with respect to a particular suit, if that is expressly or impliedly barred, if that bar may be in the CPC or that bar may be outside the CPC. अब CPC के लिए तो लिख दिया herein contained, provisions herein contained. तो CPC के लिए जो बार है वो तो herein contained वाले टर्म में आ जाएगा. तो फिर बचा क्या? जो CPC के बियॉन्ड बाहर अगर किसी लॉ में एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कोई बार है, CPC के बियॉन्ड बाहर अगर कोई एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार है, उसके लिए फॉर दैट यू हैव टू सी दैट द कोर्ट डज नॉट हैव jurisdiction. So means the court will have the jurisdiction of all suits of civil nature, but if there is a restriction upon the taking of cognizance by the court upon any suit under CPC, then the court will not have jurisdiction. Or if there is a law outside CPC in which an express or implied bar has been created, then also the court will not have jurisdiction. तो ब्रॉडली तो यही समझ में आया. अब फिर से इसको दोबारा लिखते हैं. दोबारा देखो. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग द कोर्ट शैल हैव jurisdiction to do what? To try. Courts shall have the jurisdiction to try means there is a mandate that the court shall have the jurisdiction to try the suits. Jurisdiction to try what? Suits of civil nature. अब इसके exceptions क्या हैं? पहला, the restrictions in the CPC. Restrictions, regulations. अब it is not that कि CPC में सिर्फ restriction होगा तो मतलब बार होगा, सिर्फ restriction होगा तो मतलब बार होगा. अब CPC में जैसे ये सब है रेस जूडिकाटा, कि एक बार अगर सूट डिसाइड हो चुका है तो उस पर दोबारा आप ट्रायल नहीं ले सकते. तो रेस जूडिकाटा का बात तो CPC में ही आएगा.
उसी तरीके से यू से ऑर्डर टू रूल टू, बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहाँ पे उस सूट को दोबारा ट्राई करने के लिए बार लगा रखा है। तो वैसे केसेस में आप उस सूट को सीपीसी के बार की वजह से ट्राई नहीं कर सकते। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे बार तो लगाया है, बट दे आर गिविंग यू सर्टेन प्रिंसिपल्स regarding the jurisdiction of the court. Like you talk about the territorial jurisdiction. Now every court is not having territorial jurisdiction to try that particular suit. Every court will not have territorial jurisdiction to try that particular civil suit. Only that court will try that particular civil suit. Only that court will try that particular civil suit. Which court has the territorial jurisdiction on that particular matter, और विच कोर्ट हैज़ द पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन। कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होगा लेकिन हर कोर्ट का नहीं होगा, उसी कोर्ट का होगा जिसके पास टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर और पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है। सो व्हेन दे से सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड, सो एक्चुअली दे मीन टू से that if there is any bar in the CPC, so the bar will apply, and if there is no bar but there is regulation, if there is no bar, only the regulation regarding the jurisdiction etc., then that regulation will apply, and the court will have jurisdiction only subject to those provisions, plus the other exceptions they are carving out. Plus the other exception that they are carving out is any express or implied bar. अब obviously subject to the provisions herein contained, तो उसमें CPC तो cover हो गया, then obviously here they mean express and implied bar, it is outside CPC. अब example ले लेते हैं, जैसे bar of res judicata, for example bar of res judicata. A bar of res judicata is an express bar upon trial by the court. अब it is in CPC itself. तो अब बताइए बार ऑफ रेस जुडिकाटा इस वाले पार्ट में फॉल करेगा या सेकंड वाले पार्ट में फॉल करेगा? इट विल फॉल इन फर्स्ट और सेकंड? इट विल फॉल इन फर्स्ट, ऑब्वियस, क्योंकि फर्स्ट सीपीसी लिखा है, तो सीपीसी में जो भी बार है वो फर्स्ट पार्ट में फॉल करेगा। और सीपीसी के बियॉन्ड अगर कोई बार है किसी लॉ में, दैट विल फॉल इन दिस साइड, सेकंड पार्ट। अब बार को भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड सेपरेटली when I talk about jurisdiction, territorial pecuniary jurisdiction, when I talk about foreign judgment, when I talk about res judicata, res sub judice, etc. So that is all related to some kind of regulation or bar. So when I discuss all these provisions, so subject to the provisions herein contained will be covered, and when I discuss separately the express and implied bar outside CPC, so then that part of the सेक्शन 9 विल बी completed. वो तो हम लास्ट में करेंगे. व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं आपको पहले ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद मैं आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड बार, और उसके बाद जब लास्ट में हम रेस जुडिकाटा वगैरह शुरू करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा उसमें, क्योंकि उसके बाद तो आपको पूरा सीपीसी पढ़ना है. तो सीपीसी में जितने भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन को अफेक्ट करते हैं वो सब इस पार्ट में फॉल कर जाएंगे. दैट इज द सीक्वेंस वी वुड डिस्कस दिस सेक्शन. अब नाउ लेट अस फर्स्ट कंसंट्रेट अपॉन दिस पार्ट. अब यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 9. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेक्शन 9? अब देखो, पर्पस ऑफ सेक्शन 9 इज नॉट टू डिफाइन व्हाट इज meant by suit of civil nature. Purpose of section 9 is not that what is meant by suit of civil nature. It does not give the definition that what is meant by suit of civil nature. The purpose of section 9 is clearly to declare as to in what matters civil court will have jurisdiction. In what matters have the civil court have the jurisdiction. And the declaration is very clear. The declaration is that is a suit of civil nature. If the suit is of a civil nature, then the court shall have jurisdiction. मतलब क्या, एक तरह का मैंडेट हो गया कोर्ट के ऊपर, सब्जेक्ट टू द रूल्स jurisdiction एक्सेट्रा. तो एक तरीके का मैंडेट हो गया कोर्ट के ऊपर कि अगर ये प्रूफ हो जाए कि वो सूट सिविल नेचर का सूट है, अगर ये प्रूव हो जाए
that suit is of a suit of civil nature, then it is mandatory upon the court to conduct the trial. Is it fine? अब इसी का उल्टा अगर आप पढ़ो तो एक पार्टी के पास एक राइट हो जाता है, ए पार्टी गेट्स अ राइट कि अगर उसके पास सूट ऑफ सिविल नेचर है तो ही कैन गो टू द कोर्ट एंड कोर्ट इज बाउंड टू ट्राई हिज सूट. अब ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू द रूल्स related to territorial, pecuniary and subject matter jurisdiction. So means me as an individual, I have a right to file a civil suit if my suit is of a civil nature. And you, if the court, you have the duty to entertain and try that civil suit. You have the duty to entertain and try that civil suit if the suit is of a civil nature, subject obviously to the exceptions. So is that fine? That is the purpose and policy behind section 9, and that is why you say that section 9 is basically the gateway into CPC. अब इस पे लिख लीजिए थोड़ा सा. So right, section 9 has the purpose simply to declare the jurisdiction of the civil courts. It can be seen from two perspectives. Number one, if the suit is of a civil nature, then the court shall have the jurisdiction to try the suit. That is, if it is proved, points में कर लीजिएगा, A, that the suit is of a civil nature, and B, that there are no restrictions upon the jurisdiction of court, है ना, express, implied bar, etc. That there are no restrictions upon the jurisdiction of the court, either under the CPC or any other law, either under the CPC or in any other law, then the court is duty bound to try that suit. इसको next paragraph में लिख लेना. Then the court is duty bound to try that suit. तो ये first point था. अब next point लिखो आप. Point number 2. From the perspective of a party, the party has a right to file a civil suit and to get it tried by the concerned court. अब इसमें एक केस लिखिएगा, that is Abdul Ghafoor versus State of Uttarakhand and others, that is 2008 Supreme Court. लिखिए इसमें, it was held, number 1, अभी जो लिखवाएं वही पॉइंट्स हैं पर दोबारा लिखवा रहा हूँ, that civil courts have inherent jurisdiction in all kinds of civil disputes unless it is barred. Then number 2, every person also has an inherent right to bring a civil suit. Every person also has an inherent right to bring a civil suit. तो ये दोनों तरफ से कोर्ट के पास ड्यूटी है कि वो सिविल सूट को ट्राई करे अनलेस इट इज बार्ड, और एक व्यक्ति के पास एक इनहेरेंट राइट है कि अगर उसके पास एक सिविल डिस्प्यूट है तो वो कोर्ट में सिविल डिस्प्यूट फाइल करके, कोर्ट में सूट फाइल करके उसका ट्रायल करवा सके. So that you must always keep in your mind, and it is presumed, this fact is presumed that if I am an individual, I have got a legal entity. If I have got a civil dispute with you, I do have a right to get the civil suit filed and get it tried by the court, if it is a suit of civil nature. So that fact is presumed in my favor, in your favor, in everybody's favor. But obviously that is all subject to the provisions of the CPC. So I cannot arbitrarily go to any court and file there. और जैसे मेरा आपके साथ डिस्प्यूट हुआ दिल्ली में और मैं केरला गया घूमने, तो वहाँ पर मैंने केरला के कोर्ट में सूट फाइल कर दिया. So can you do that? So I cannot file my civil suit anywhere, wherever I go. There has to be some rules of jurisdiction. There has to be some other rules which have to be followed. So obviously it is subject to the CPC, and it is subject to express and implied bar. But if there is no subjection clause is there, and I have followed the requirements of the CPC, then my suit cannot be denied by the
court, provided that it is a suit of civil nature. अब ये जो सेकंड पॉइंट है ये इस केस में और हेल्ड हुआ था, उसको लिख लो आप, गंगाबाई वर्सेस विजय कुमार 1974 सुप्रीम कोर्ट। अब एक और केस लिखो आप, RSRTC एंड अनदर वर्सेस बाल मुकुंद बैरवा, BAIRWA बैरवा, और ब्रैकेट में 2 लिख लो, बैरवा 2 मतलब इट इज द सेकंड केस, दैट इज 2009 सुप्रीम कोर्ट। RSRTC इज राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिस इज 2009 सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें पॉइंट्स लिख लिए, इट वाज हेल्ड, पॉइंट नंबर 1, राइट द फर्स्ट वन, द पर्पस ऑफ सेक्शन 9 इज टू डिफाइन, the purpose of section 9 is to define the jurisdiction of civil court. Purpose is to define the jurisdiction of the civil court and not to define as to what is meant by a suit of civil nature, and not to define as to what is meant by a suit of civil nature. अब इस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे, what is meant by civil nature, that we would discuss it later on, what is meant by civil nature. अब देखो इसमें often various people are confused, क्योंकि आपकी फैकल्टीज में भी आपके टीचर्स सूट ऑफ सिविल नेचर ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते होंगे, and they may be giving you examples as to whether this is a suit of civil nature or not. Suppose if a Pardanasi lady, if she files a suit claiming that I have a right to observe Parda, so it is a suit of civil nature. ये सब आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये सेक्शन जो है it is not just to give that what is a suit of civil nature. आप इस ध्यान से पढ़ोगे तो suit of civil nature को तो डिफाइन किया भी नहीं है इसमें। The purpose, the larger purpose, main purpose of section 9 is to declare it work as a declaratory provision, and it declares the jurisdiction of the civil court. And a civil court where have a jurisdiction in all suits of civil nature, but subject obviously to the regulations pertaining to jurisdiction, and subject obviously to the express or implied bar outside CPC or any bar within CPC. So that is declaration of the jurisdiction of the civil court. That was the first point in this case. Second point लिखिए आप, section 9 is a manifestation and fulfillment of the maxim obi jus ibi remedium, और ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। That is it provides for the mechanism of obtaining the relief in a case of violation of legal right. It provides for the mechanism of obtaining the relief in a case of violation of legal right. अब थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड और फोर्थ पॉइंट इम्पोर्टेंट है, फोकस, राइट द थर्ड पॉइंट, राइट all civil courts have plenary jurisdiction upon the suits of civil nature. Plenary, all civil courts have plenary jurisdiction upon the suit of civil nature. Plenary, PLENARY. All civil courts have plenary jurisdiction upon the suit of civil nature unless there is an express or implied restriction upon such jurisdiction. Now, what is meant by all civil courts have plenary jurisdiction upon the suit of civil nature? या फिर all courts have the plenary jurisdiction upon civil suits. So all courts should have plenary jurisdiction in civil suit means that you did not need to have a separate declaration that this court have the jurisdiction. All the civil courts have automatically jurisdiction to try the civil suits. So the court have per se jurisdiction in civil suits. That is called plenary jurisdiction. हर कोर्ट के पास हर केस को सुनने का jurisdiction होगा unless it is expressly barred, or unless it is impliedly barred, or unless it is regulated by some provision. और जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, दिल्ली में कोर्ट का jurisdiction है और मैंने केरल में फाइल कर दिया, तो obviously there is a bar of jurisdiction upon the Keral's court to not to try.
so the matter should be shifted to the Delhi's court. लेकिन प्लेनरी jurisdiction means मतलब हम आपके पावर को मानकर चल रहे हैं कि आपके पास पावर है, और अगर आपके पावर्स पे अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उसको प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हम मान के चल रहे हैं कि आपके पास पावर है. सो प्लीनरी मीन्स व्हाट? ब्रॉडेस्ट. प्लीनरी मीन्स यू हैव द ब्रॉडेस्ट पावर to have the jurisdiction in the civil suit of civil nature. Now whether you actually have the power to try or not, उसके लिए the examination of CPC and the other express or implied bars and the other laws will have to be examined. और जैसे हम plenary polity में पढ़ते हैं, जो legislative powers हैं in the polity, तो एक डॉक्ट्रिन है वहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीनरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन. पार्लियामेंट के पास इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लिस्ट 1 द टॉपिक्स आर गिवन दैट द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दैट लिस्ट, एंड देयर द रूल इज दैट द रूल ऑफ प्लीनरी इंटरप्रिटेशन मीन्स if there is a topic on which the parliament has the power to make a law, then the power has to be read plenary. Means the parliament has the broadest power to make the laws upon all those expressed topics and implied topics as well, unless restricted by some law. So plenary का मतलब होगा हमेशा, it means it is as plain as simple, per se and broadest. So plenary powers means to use any power. Court can use any power. Court is having all powers unless restricted. So obviously there are certain other courts which are working on particular matter, subject matter or jurisdiction. So whatever they are doing, to that extent those courts' powers are restricted, but whatever is left, everything done by this civil court, normal civil court. So there are several special civil courts are also formed, like of Rent Control Act, Revenue Court, etc. अगर स्पेशल कोर्ट्स हैं, बट एक कॉमन सिविल कोर्ट जरूर होगी हर जगह. So whatever are left by the special civil courts, all the powers are with the normal civil court, because others are the special court, only restricted to that particular matter or jurisdiction. So do you understand what is meant by plenary? Now write down the fourth point. Fourth point also related to plenary only, right? It is presumed that if a suit is filed in civil court, the court does have jurisdiction to try the suit, and therefore the burden of proving the lack of jurisdiction is upon whom? Therefore the burden of proving the lack of jurisdiction, the defendant obviously, the party who objects to the jurisdiction, so that will be defendant obviously. So therefore the burden of proving the lack of jurisdiction would lie upon to the party who objects to the jurisdiction, and if any such objection is raised, the same court will decide as to whether it has jurisdiction or not. So what I am saying here is, मान लो दिल्ली में एक कोर्ट है और ए ने बी के खिलाफ एक सूट फाइल कर दिया इधर. So the rule is that there will be a presumption that this court has jurisdiction. अब अगर कोई पार्टी कहता है, मान लो बी कहता है कि that this court is not having jurisdiction, then this B will raise a preliminary objection. B को अपने रिटन स्टेट में एक preliminary objection raise करना पड़ेगा, और वो बाद में भी रेज कर सकता है वैसा, that this court does not have jurisdiction. और क्योंकि जो ऑब्जेक्शन बी रेज कर रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा?
the burden of proof lies upon B, क्योंकि B ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है तो the burden of proof lies upon B. अब unless B proves that this court does not have jurisdiction, the court will continue with the presumption that I have jurisdiction. और ये ऑब्जेक्शन किसके सामने रेज करेगा? उसी कोर्ट में. At the same court will frame the preliminary issue, and the same court will frame the preliminary objection of jurisdiction. So the preliminary issue, तो सूट के ट्रायल के पहले the court will frame the preliminary issue and it will conduct the trial upon that. कोर्ट पहले हियरिंग करेगी कि मेरा jurisdiction है कि नहीं. And burden of proving the lack of jurisdiction is lie upon B, and thereupon A will reply upon that. और उसके बाद अगर प्रूव हो गया that no this court does not have jurisdiction, then the court shall return the plaint and be presented to the proper court. तो ये सब तो हम रिटर्न ऑफ प्लेंट के साथ पढ़ेंगे. राइट नाउ द पॉइंट इज ओनली दिस मच कि कोर्ट मानकर चलेगा कि मेरा जुरिडिक्शन है, तो आप सूट लेकर जाओगे तो कोर्ट आपका सूट ले लेगा, unless the lack of jurisdiction is manifest on the face of it. और उसके बाद जो पार्टी कहता है कि इस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, तो उस पार्टी की ड्यूटी होगी, बर्डन होगा उस पर कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे और ऑब्जेक्शन के बाद वो एविडेंसेस प्रोड्यूस करे एज टू हाउ दिस कोर्ट डज नॉट हैव jurisdiction. And if it is proved that this court does not have jurisdiction, then only the court will return the plaint. Now, which court will decide that this court is having jurisdiction or not? The same court. उसके ऑर्डर के खिलाफ आप अपील कर सकते हो, but it is the same court which will decide whether it has jurisdiction or not. So these are the 3-4 points which are very important related to jurisdiction. तो जिस कोर्ट में आप जाओगे उस कोर्ट का प्रिजम्पशन होगा कि उस कोर्ट का jurisdiction है. कोर्ट मानकर चलेगा कि मेरा jurisdiction है, unless it is very manifest. अगर बिल्कुल manifest केस है कि उसका jurisdiction नहीं है, अगर ऐसा केस है तो वहीं पे मना कर सकता है कोर्ट. And the party concerned will raise the objection, and the burden of proof lies on that party to prove that this court does not have jurisdiction. So fine. Hope you have understood this much. अब एक बार फिर से रीडिंग करते हैं सेक्शन 9 की. The courts shall, subject to the provisions herein contained, have jurisdiction to try all suits of a civil nature, excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. So we divided that into certain parts. One is the word court shall. Shall means it is mandatory, and then they are saying have jurisdiction to try. The court shall have jurisdiction to try. Jurisdiction here basically relates to competency, means court will be competent to try. The court will be competent to try all suits of a civil nature. And then finally you have two limitations. One is subject to the provisions of the CPC, and other is the other subject which expressly or impliedly barred. Now here I told you that the provisions of CPC, res judicata and all those provisions, rules related to jurisdiction, rules related to order to rule 2, etc., that is to be fall here. But express or implied bar, that has to be seen in any other law. Express or implied bar that has to be seen in any other law. Means there are restrictions and regulations upon CPC also. There is express bar in CPC also, and that we have already covered in the words here, provisions herein contained. जो CPC में जो है वो वहीं पे fall कर जाएगा, and what is remaining is there may be expressed or implied bar outside the CPC. So this has to be discussed separately, but the other part we are discussing is that the court shall have, means if it is proved that suit is a suit of civil nature, then the court shall have the jurisdiction to try the suit. Then I also told you that the word shall makes it mandatory to the court to try the civil suit. Civil suit means suit of civil nature,
subject to the regulations in the CPC, and subject to the principles of jurisdiction, etc. Then I also told you that every person has an inherent right to have its suit tried by a court, but obviously that should be a court of jurisdiction because it is subject to the provisions of the CPC. So any provisions related to jurisdiction, etc., the jurisdiction of the court will apply in that case only to the subject to the provisions of CPC. तो सेक्शन 9 को आप दो तरीके से देखेंगे। सेक्शन 9 में कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। नेगेटिव मीन्स रेस्ट्रिक्टिव। Now we see what is the positive parts of section 9 and what is the negative parts. You see the word used is civil nature. It is not the civil suit. So it expands the jurisdiction. Then it itself provides the restriction subject to the provisions of the CPC and also the express and implied bar. तो कोर्ट के jurisdiction का restriction भी section 9 में ही provided है and the कोर्ट के jurisdiction को widely apply करने के लिए the word used is not the civil suit but the civil nature. Plus एक और बात है positive that they are using the word shall have the jurisdiction means अगर बाकी के principle भी examine हो जाएं and it finds that the court had the territorial jurisdiction then the court shall try the suit. It cannot refuse to try the suit unless it is restricted in the CPC. But अगर restriction नहीं है and the court had the territorial, pecuniary and subject matter jurisdiction, then the court cannot refuse to try that particular civil suit. So these parts, the word shall, it makes to the court mandatory to try, and the word civil nature used, which gives an expensive application to the jurisdiction of the court, which we would discuss after a while. So these are the parts which are the positive aspects of section 9, which confers jurisdiction, and the restrictive aspects subject to the provisions of CPC and as well subject to any express or implied bar. So that is the restrictive or negative aspect. So section 9 has got both the aspects. And one more point I already told you that the purpose of section 9 is not to define the suit of civil nature as such. The purpose of section 9 is to define the jurisdiction of the court. तो ये तो आप लिख चुके हो, अब इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो आप। Section 9 can be seen as both positive and negative. The positive aspect of section 9 is that it confers compulsory jurisdiction upon courts in the matter of suits of civil nature. The use of word shall makes this explicit. The word used in section 9 are not civil suit, rather suit of civil nature. By using the word nature, here an expensive jurisdiction has been conferred upon the civil courts. So by this the initial part of discussion is over. Now we have to get into the understanding of the words suit of civil nature. First of all we are talking about the word shall, etc. and the purpose of section 9. Now that part is over. Now the second part is civil nature and third part is express or implied bar. Second part is civil nature and third part is express and implied bar. And then after that the res judicata and the other topics. Now you tell me what is the meaning of the word civil nature, and also as to they could have written civil suits. They could write like this: the court shall have jurisdiction to try all civil suits, but instead they are writing all suits of civil nature. So what is the difference between using the word the nature and using the word suit here? And also why had they done so? Why they have used the word nature instead of suit? You see, when you talk about civil suit, means what? When you talk about the cause of action, the cause of action involves some such legal right which is the pure civil
legal right, and it contradiction with and in contradicting distinction with any criminal right. तो दो ही तरीके के राइट होंगे, सिविल एंड क्रिमिनल. अब if the right involved is conferred by some civil law, if the right involved in the case is conferred by some civil law, then that will be a civil right, and if the suit is about the enforcement of that civil right, then it will be called a civil suit. What will be a civil right? That they are not explaining here in section 9. That is expected that we are knowing already. But something which is not of a criminal nature can always be of a civil nature. So any right which is conferred or guaranteed by any civil law will be called a civil right. And if there have been a violation of civil right, then the suit will be called a civil suit. So पहले तो what do you mean by a civil suit? That you need to understand. And then why did we not use the word civil suit? Rather we used the word suit of a civil nature, just to broaden the scope of jurisdiction of the courts. अब इसमें एक sentence लिखो, write upon it. Any law which is a civil law and confers a legal right will be said to be creating civil legal rights in contradiction with any criminal law. In contradiction with any criminal law. Any law which is civil law and confers a legal right will be said to be creating civil legal right in contradiction with any criminal law or criminal right. A suit which is filed for the enforcement of a pure civil legal right will be called a civil suit. However, there can be cases wherein the violation involves not only a pure civil legal right, rather there are certain other issues also involved which may be of a social religious nature and not of a pure legal nature. Such matters would not fall under the word civil suit, as civil suit will involve only pure civil legal rights. Next paragraph. Section 9, by using the word civil nature, actually expands the jurisdiction of the court, and it includes not only suits pertaining to pure civil legal rights, rather also those suits wherein, apart from some pure civil legal right, some other issues which are not of a pure legal nature, that is, they are of some social or religious natures, are also involved. That is, they are of some social or religious nature are also involved. तो जब भी आप सिविल सूट की बात करते हो, whenever you talk about the civil suit, तो सिविल सूट मतलब क्या? The suit pertains to violation of some pure civil legal rights. अब जैसे your right to privacy, someone has violated your right to privacy. Your right to privacy is a pure private legal issue. Now you filed a suit for that. So that cause of action is related to a pure legal right and therefore it is a civil suit. अब कुछ भी आप समझ लो, जैसे right to move on the road. The right to move on the road, right to come out of your house. If someone has obstructed the passage, so he has caused a wrongful restraint upon you or wrongful confinement upon you. So your right to move out of the house is a pure civil legal right, and someone causes the obstruction to that, so he causes wrongful confinement to you. अब उसके लिए अगर आप सूट करते हो, दैट बिकम्स ए प्योर सिविल सूट, क्योंकि वहाँ पर और कोई इशू इन्वॉल्व नहीं है. आपको बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन एग्जामिन करना पड़ता है कि किस कॉज ऑफ एक्शन के लिए तुमने सूट किया है, किस कॉज ऑफ एक्शन के लिए तुमने सूट किया है. अब जैसे मेरा राइट कि मैं अपने धर्म को बिलोंग करूं, मैं अपनी जाति को बिलोंग करूं. अब मेरे जाति के लोगों ने मुझे जाति से निकाल दिया. अब द पॉइंट इज दैट आई हैव फाइल्ड अ सूट
कि मुझे मेरी जाति में वापस ले लो। और नाउ द कास्ट इज नॉट ए लीगल इशू, दैट माई रिमूवल फ्रॉम द कास्ट एंड माई बीइंग ब्रॉट बैक टू द कास्ट, इसके लिए अगर मैं सूट करता हूँ दैट यू गेट बैक मी टू माई कास्ट, सो दैट इज ए प्योर सोशल फिनोमिनन। कास्ट इज ए प्योर सोशल फिनोमिनन, उसको लीगैलिटी से कोई मतलब नहीं है। एक्सेप्टिंग द रिजर्वेशन एक्सेट्रा का अगर कोई इशू इन्वॉल्व हो जाए, अदरवाइज उसको लीगैलिटी से कोई मतलब नहीं है। अब सपोज अ पर्सन फाइल्ड अ सूट दैट ही हैज एक्सपेल्ड फ्रॉम हिज कास्ट एंड यू प्लीज इंडक्ट बैक मी टू द कास्ट, टू माई कास्ट। अब इट इज नॉट अ सिविल लीगल राइट। अब योर राइट टू बी belong to a particular caste, it is not a civil legal right, it is a social right but not a civil legal right. And therefore if you have filed a suit for your restatement in your caste, that is not a civil suit, because उसका जो cause of action है, cause of action is what? The right to continue to be a member of that caste, the right to be continue to the member of that caste and the violation. तो आप उस राइट को चेक करो कि क्या ये सिविल लीगल राइट है या फिर सोशल या रिलीजियस राइट है। इन दिस केस इट इज अ सोशल राइट, एंड सिंस इट इज अ प्योर सोशल राइट एंड यू आर फाइलिंग द सूट ओनली फॉर द enforcement ऑफ दैट सोशल राइट, it will not consider to be a civil suit. It is not at all a civil suit because it is a pure social right that you are enforcing. लेकिन मान लो उसी में फॉर एग्जाम्पल अब कास्ट से निकाल तो दिया है उन्होंने, कास्ट से निकालने के बाद उन्होंने अपने गांव से निकाल दिया, दे एक्सपेल्ड द पर्सन फ्रॉम द कास्ट एंड थ्रो हिम आउट ऑफ द विलेज, एंड दिस पर्सन's हाउस हैज बीन कैप्चर्ड बाय द विलेजर्स एंड हिज राइट टू फूड शेल्टर एंड वर्शिप एक्सेट्रा इज ऑल बीइंग डिनाइड। अब वो कहीं गांव के बाहर किसी पेड़ में के नीचे किसी कोने में रहता है, अब उसको न खाने को कुछ मिल रहा है न रहने को छत है, सब चीज से वंचित हो गया। अब यहाँ पर व्हेन ही फाइल्स द सूट देयर आर टू इशूज इन्वॉल्व्ड, तो कॉज ऑफ एक्शन में दो इशूज इन्वॉल्व्ड हैं। एक तो माई राइट टू बी कंटिन्यू टू अ मेंबर ऑफ माई कास्ट, अब दैट इज नॉट अ सिविल राइट, दैट इज नॉट अ सिविल राइट, दैट इज अ सोशल राइट। बट द अदर इशू इन्वॉल्व दैट माई राइट टू हैव फूड वर्शिप शेल्टर, those basic things. Now that is a matter of your civil legal right, because your right to life includes right to shelter and right to food. Right to life includes right to shelter and right to food, and therefore in this suit there are two parts of cause of action. One is right to be reinstated into the caste, and that is not a civil legal right, that is a social right. But the right to be provided proper food and shelter, that is a legal right. अब यहाँ पर this suit, when you look at this with the perspective of food and shelter, it is a civil suit. But since in this social issues are also involved, so it is not a pure civil suit, because pure civil suit का मतलब है only legal rights are involved. But here there are two rights are involved. One is legal right to have the food and shelter, and the other is what? The right to be reinstated in his caste. That is a social right. Now this is a suit wherein a social right and a legal right are involved. अब इस तरीके के सूट अगर आपने सेक्शन 9 में सिविल सूट लिख दिया होता, then the court shall have the jurisdiction upon civil suits, then in that case this type of suit the court would not have had jurisdiction, because of the suit involves two things: civil rights and the non-civil rights, that is social right. And in this case it is not a pure civil suit, and therefore the court will not have the jurisdiction in this case if it was so. So ऐसे cases को, ऐसे issues को, ऐसे suits को भी कोर्ट के jurisdiction के एम्बिट में लाने के लिए उन्होंने सूट ऑफ सिविल नेचर लिखा है। और आप इन दो इश्यूज में से, जो मेरे पास दो इश्यूज हैं, दो राइट्स हैं, सोशल और लीगल, आप उस सूट में चेक करो that which is the main right for which the suit has been filed, which is the dominant issue in the suit for which the suit has been tried. Now it can be social, it can be legal, I am not commenting upon that. But if your reinstatement to your caste is a social issue, fine,
लेकिन अगर उस रीस्टेटमेंट को ना किया जाए, उसकी वजह से आपके लीगल राइट वायलेट हो रहे हैं। एंड द मेन कंसर्न इन द सूट इज ऑफ द फूड एंड शेल्टर एक्सेट्रा। इफ द मेन कंसर्न ऑफ द सूट इज फूड, शेल्टर एक्सेट्रा, देन यू कैन से दिस सूट इज सूट ऑफ सिविल नेचर। अब नेचर मीन्स व्हाट? कैरेक्टर। नेचर मीन्स कैरेक्टर। व्हाट इज योर नेचर? फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेचर? तो आपके कैरेक्टरिस्टिक देखा जाएंगे एंड देन इट विल बी डिसाइडेड दैट यू आर ऑफ ए सच एंड सच नेचर। अब नेचर में आपके जो मेन डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो देखा जाएगा। अब उसके साथ बाकी की और भी चीज़ें हो सकती हैं। बट व्हाट इज़ योर डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक? उस डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर देखा जाएगा। अब उस सूट में डोमिनेंट इशू इज फूड एंड शेल्टर। इफ डोमिनेंट इशू इज फूड एंड शेल्टर, then that civil right thing is dominant and therefore it is a suit of civil nature, even though that social issue is involved. So to include these kind of suits within the jurisdiction of the court or within the ambit of the jurisdiction of the court, wherein the main dominant issue is some legal right, but there are some social or religious issue also which are involved, but those social or religious issues are not the main factor for which the suit has been filed, but they are something which are associated, but the main purpose for the suit has the civil right involved, then you will say that it is a suit of civil nature. तो इसमें और लिख लो, वैसे पिछले पैराग्राफ में लिख चुके हो और क्लैरिफाई कर रहे हैं इसमें। So write down, if the word civil suit had been used, then only those suits would have been fallen under section 9, in which only pure civil legal rights were involved. However, there can be suits in which the cause of action does not relate only to a pure civil legal right, rather, some other non-legal issues are also involved. In such cases, the examination has to be as to which of the issues pertaining to the cause of action is the dominant issue. And if it is found that the legal right involved is the dominant issue and the other non-legal issues are only incidental or are required to be decided upon in order to decide the legal issue, then the suit will be considered to be essentially a suit of civil nature and the civil courts will have jurisdiction upon such suits also. अब मेन जो पॉइंट आपको इसमें समझना है कि या तो सूट ऐसा होगा जिसमें आपका काउज ऑफ एक्शन सीधा एक लीगल राइट इन्वॉल्व है, उसमें कोई भी और इश्यूज इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज ए प्योर लीगल राइट इन्वॉल्व विच हैज बीन वायलेटेड, so that is there is a violation of that legal right, so that is a cause of action, so that becomes a cause of action and that becomes a pure civil suit. तो उसमें तो कोर्ट्स का jurisdiction होगा ही होगा, उसमें तो कोर्ट का jurisdiction होगा ही होगा, but when this is a suit of civil nature, then that means what? Civil suits plus some other issues may be involved. So there can be a case which is only of pure civil suit, जिसमें सिर्फ लीगल राइट्स इन्वॉल्व हैं। देयर कैन बी अ केस इन विच देयर इज ओनली अ प्योर सिविल सूट इन विच ओनली लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व, एंड इफ दैट इज द केस then that will be considered to be within the jurisdiction of the courts. But the point is that there may be certain suits in which the cause of action pertains primarily to the civil legal rights, but maybe the decision of the civil legal rights cannot be done without deciding some social or religious issue, or some social or religious issues are involved in some ancillary manner. But main जो dominant characteristic है, जो main dominant characteristic है, that is the civil legal right. So that is the case. Then also you will say that it is suit of civil nature, and there also the court shall have jurisdiction. But suppose it is just the opposite. The civil legal right involved is only an ancillary thing but not material in that case, and the suit has been filed basically for the determination of some
सोशल और रिलीजियस क्वेश्चंस। तो अगर सूट इन इट सेंस सोशल और रिलीजियस इशूज से रिलेटेड है और सिविल और लीगल राइट सिर्फ एंसिलरी फॉर्म में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, देन दैट सूट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। तो यू हैव टू सी तो आपको कॉज ऑफ एक्शन चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या राइट इन्वॉल्व है, व्हाट ऑल इशूज आर इन्वॉल्व, और फिर देखोगे कि एक लीगल राइट इन्वॉल्व है और एक दो सोशल और रिलीजियस राइट इन्वॉल्व है। फिर आप देखोगे कि सूट का एसेंस किस बात पर लाई करता है। अब वो जो कास्ट वाला एग्जाम्पल था, इन दैट आई हैव बीन रिमूव फ्रॉम माई कास्ट because of which I have denied food and shelter, and I want the court to restate me into the caste because I want the food and shelter which is denied. So I want the right to of food and shelter given back to me. In this, the court may refuse to pass the order of restatement in the caste, but court may always pass the judgment in his favor to direct the people not to prohibit him, not to deny him for food and shelter, etc. So that is again the dominant part of suit is food and shelter, and that is a pure legal right. So obviously that is a suit of civil nature. अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, बट उससे पहले एक केस लिख लो आप। राइट द नेम ऑफ द केस, मोस्ट रेवरेंड PMA मेट्रोपॉलिटन एंड अदर्स वर्सेस मोरान मा Mathoma. Most Reverend PMA Metropolitan and others versus Moran Mathoma. That is 1995 Supreme Court. It is three judges bench and judgment delivered by RM Sai Justice. Three judges bench. तो जितने भी पॉइंट्स पढ़े अभी तक वो इसी केस से हैं। So what are the points in this case? Just write the highlights. अब डिटेल तो हमने लिख ही ली है, that you have already written details. Just write the highlights. First point is section 9 has both positive and negative dimensions. Section 9 has positive and negative both dimensions. तो ये लिख चुके हो आप, एग्जाम में आप पूरा लिख के आना, जो लिख चुके हैं हम ऑलरेडी। तो इसको एक्सपेंड आप अपने आप कर लेना, that you have written already, that section 9 has positive and negative both dimensions. Number 2, the word shall in section 9 makes the jurisdiction of the court mandatory. Then number 3, the word civil nature makes the jurisdiction expensive. तो इनकी डिटेल्स भी लिख चुके हो आप, सेल की भी सिविल नेचर की भी। एंड नंबर 4, there is distinction between words civil suits and suit of civil nature. There is a distinction between the words civil suit and suits of civil nature. तो ये भी कर चुके आप। So that is also we have discussed. So 4 points are there in this case. तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया, everything was there in this case. अब before getting to the examples, उसके पहले let's read the 2 explanations given in section 9. Explanation 1. A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies. A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies. अब ये क्लियरली कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा सूट जिसमें किसी ऑफिस को होल्ड करने का राइट या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट इन्वॉल्व हो तो वो सूट ऑफ सिविल नेचर माना जाएगा, notwithstanding the fact that the examination of your right to hold the office or to hold that property, to get the property, is dependent upon
upon the decision of some purely religious questions. Dependent upon the decisions of some purely religious questions. My question to you is, does explanation 1 define a suit of civil nature? Does explanation 1 defines a suit of civil nature? Answer is no, it does not define. It does not define it, just giving an example. तो सेक्शन 9 कहीं भी सिविल नेचर को डिफाइन नहीं कर रहा. एक्सप्लेनेशन 1 इज एक्चुअली ओनली गिविंग एग्जाम्पल. अब जैसे एक्सप्लेनेशन 1 में क्या लिखा है, ए सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड. तो सिविल सूट सिर्फ राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू ऑफिस का तो नहीं होगा. इट कैन बी एनीथिंग एल्स ऑल्सो. इट कैन बी पर्सनल राइट ऑल्सो. तो सिविल सूट के अलग अलग तरह के राइट होते हैं. उसमें पर्सनल राइट होगा, प्रॉपर्टी राइट होगा, उसमें राइट टू ऑफिस हो सकता है. उसमें से पर्सनल राइट की बात ये नहीं कर रहे. दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी और ऑफिस. अब यू टॉक अबाउट अ टेम्पल एंड अराउंड द टेम्पल देयर इज सम लैंड. अब सूट इस बात का है कि वो लैंड उस टेम्पल को बिलोंग करता है कि नहीं. अब हेयर द राइट टू प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व. The issue mainly pertaining to property is involved. But suppose the answer to that issue lies in the fact as to some religious rights are there or not, or some pure religious questions are involved. अब अगर उस religious question को solve करोगे या decide करोगे तभी आप property वाले मैटर को decide कर सकते हो. तो सिर्फ इस वजह से कि उस property वाले dispute को decide करने के लिए किसी religious dispute को decide करना पड़ेगा, will that suit lose its character of being a civil nature? This explanation says no. फिर से पढ़ लो. A suit in which the right to property or to an office is contested. जैसे right to hold an office. जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो केस पढ़ा होगा, वैष्णो देवी साइन केस, अघोरीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ J&K. This is the case on the Article 25. जिसमें रिलीजियस रिचुअल्स की अरुणा रॉय वगैरह की बात कर रहे थे, उस टाइम डिस्कस किया था. सो एनीवे, तो वैष्णो देवी साइन केस में क्या था, दैट द कंटेस्ट वाज, डिस्प्यूट वाज दैट डज द पर्टिकुलर फैमिली, डू दे हैव द राइट टू हैव द चीफ प्रीस्ट, चीफ पुजारी ऑफ द वैष्णो देवी टेम्पल फ्रॉम दैट फैमिली ओनली. मीन्स डज द प्रेजेंट प्रीस्ट, जो अभी के पुजारी थे, क्या उनके पास उस मंदिर का मुख्य पुजारी बने रहने का हेरिडेटरी राइट है? ये सवाल था. एंड द क्वेश्चन वाज, एंड द पॉइंट वाज a lot of mismanagement of fund and norms was going on, and could the state interfere and appoint a new pujari to avoid the chaos that was happening there? Now his claim was that I am having the hereditary right to hold that office or to hold that office of मुख्य पुजारी because of some religious reasons. अब कोर्ट को ये डिसाइड करना है क्या मुख्य पुजारी का पोस्ट होल्ड करने का उनके पास लीगल राइट है. अब ये जो लीगल राइट है ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि क्या उस परिवार को ये धार्मिक रूप से अधिकार प्राप्त है कि पुजारी उन्हीं के परिवार में से हो. अब जैसे माता देवी के, वैष्णो देवी के दर्शन हुए होंगे वहाँ पर, तो उन्हीं के परिवार को दर्शन दिए थे एक्सेट्रा. इस तरीके की कहानी हो सकती है कोई, और हो सकता है उन्हीं से कहा हो कि तुम मेरी पूजा करना, और तब से पीढ़ी दर पीढ़ी वही परिवार पूजा करता आ रहा है. तो ऐसा कोई अगर रिलीजियस राइट है, तो ऐसा कोई रिलीजियस राइट है या नहीं? अगर ऐसा कोई रिलीजियस राइट है तो उसको राइट टू होल्ड द ऑफिस भी मिलेगा. अब द पॉइंट इज दैट राइट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ मुख्य पुजारी होल्ड सो मेनी लीगल थिंग्स, द मनी, द चढ़ावा which is coming to the temple, all those things will be involved, and therefore that is a very important issue. But the issue as to whether you are having a hereditary right or not, that shall be determined on the basis of some religious questions. Whether this family, as per the religion there, whether this family has the right to do the worship, and the family has the right to do the main worship. अब ये जो राइट है कि उस फैमिली के पास धार्मिक रूप से उस मंदिर में पूजा करने का अधिकार है कि नहीं,
ये जो इशू है दैट इज अ प्योर रिलीजियस इशू, और उस मंदिर में मुख्य पुजारी बनने का आपका अधिकार है कि नहीं, दैट इज अल्टीमेटली अ लीगल इशू। अब इस केस में जो आपका लीगल ऑफिस होल्ड करने का राइट था, इस केस में आपका रिलीजियस ऑफिस होल्ड करने का राइट था, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन अ प्योर रिलीजियस इशू, that is dependent upon a pure religious issue, and that is as to whether religion says that your family should do the worship there, and simply because that religious issue is involved, the suit will not cease to be a suit of civil nature, and that matter has gone up to the Supreme Court, and in fact Supreme Court ने केस डिसाइड भी किया है इसमें, और कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अब यहाँ पर आपको मेन अधिकार डिसाइड करना है कि आपको वो ऑफिस होल्ड करना है कि नहीं, उसका राइट है कि नहीं, आपको वो ऑफिस होल्ड करने का राइट है कि नहीं, दैट इज ए लीगल राइट। लेकिन ये किस आधार पर डिसाइड करोगे कि आपके परिवार को ही वहाँ पर मुख्य पूजा करने का अधिकार है, तो ये एक धार्मिक प्रश्न है, और कोर्ट ने पाया कि ऐसा कोई धार्मिक मैंडेट नहीं है, तो इसीलिए आपको हटाकर किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है। तो अगर ये सूट ऑफ सिविल नेचर नहीं होता तो ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता कैसे? सो इट वाज स्टिल अ सूट ऑफ सिविल नेचर। सो एक्सप्लेनेशन मेक्स दोज काइंड ऑफ इशूज क्लियर। इफ यू सी द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies. और जो second explanation है that is basically is a further explanation to explanation number 1. Second explanation 1 का ही further explanation है. If you read that, for the purposes of this section, it is immaterial whether or not any fees are attached to the office referred to in explanation 1, or whether or not such office is attached to a particular place. अब explanation 1 में they are talking about office and property, and explanation 2 में they are just clarifying कि जिस ऑफिस की बात हम explanation 1 में कर रहे हैं उस ऑफिस में आपको कोई सैलरी मिलता है या नहीं मिलता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लीगल राइट इन्वॉल्व है कि नहीं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इशू। और जैसे कई बार आप एक पोस्ट होल्ड करते हैं, आपको सैलरी नहीं मिलती, लेकिन आपका उस पोस्ट को होल्ड करना अपने आप में आपको कुछ लीगल राइट देता है। अब उस पोस्ट को लेकर अगर आप सूट करते हो तो इवन इफ देयर इज नो रेन्यूमरेशन और सैलरी इन्वॉल्व्ड, सिंस लीगल राइट्स आर इन्वॉल्व्ड, इट विल बी अ सूट ऑफ सिविल नेचर। और इस पर लिख लो आप, वैष्णो देवी का साइन बोर्ड का जो केस था वो भूरीनाथ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ J&K 1997 सुप्रीम कोर्ट केस था, राइट। एक्सप्लेनेशन 1 and 2 do not define a suit of civil nature, rather they are just examples of a suit of civil nature. If the main issue in the suit relates to some office or property, and the decision of that some office or property and the decision of that issue is totally dependent upon some pure religious or social questions, then also it will be a suit of civil nature, as the main issue in the suit is the issue of right to that property or office. It is also clarified in the second explanation that with respect to the office, salary or having a permanent office at a place are not the issues. The issues mainly is whether in holding the office legal rights are involved or not. तो देखो, दिस पार्ट इज ओवर। अब मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन आया और आपसे पूछा गया कि वेदर द सूट इज ऑफ सिविल नेचर और नॉट, देन व्हाट इज योर अप्रोच इन डिसाइडिंग इट। आप कॉज ऑफ एक्शन एग्जामिन करो, यू हैव टू एग्जामिन द कॉज ऑफ एक्शन। आप सबसे पहले ध्यान से पढ़ो और कॉज ऑफ एक्शन एग्जामिन करो और देखो दैट व्हाट राइट्स आर इन्वॉल्व्ड। अब या तो उसमें आप सिर्फ पाओगे कि सिर्फ लीगल राइट्स इन्वॉल्व हैं,
Either you will find that only legal rights are involved. Either you find that only legal rights are involved. And if only legal rights are involved, then obviously it is a civil suit and a suit of civil nature. But you may find that some legal rights are involved and some social and religious rights are also involved. Social or religious issues are also involved. Then your approach will be you examine as to which is the dominant issue. You examine which is the dominant issue. सूट फाइल करने का मेन इंटेंशन क्या है? It is about the legal right or it is about the social or religious right. And if you find that the legal right is a dominant issue, though that suit can be decided only upon deciding the though that legal dispute can be decided only upon deciding the religious or social right involved. Still, since the dominant issue or the main issue for which the suit has been filed is the legal issue, the suit will be a suit of civil nature. तो आपको अप्रोच ये लेकर चलना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये मेंस में आपसे पूछते हैं. एग्जाम्पल दे देंगे आपको और पूछेंगे वेदर दिस इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर और नॉट. और शुरू में एक क्वेश्चन दे देंगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सूट ऑफ सिविल नेचर. और आपका आंसर दूसरों से अलग होना चाहिए. और नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं कॉज ऑफ एक्शन वगैरह पर नहीं जाते हैं. तो अगर आप कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड आंसर डालते हो दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. उसमें आपको आधा एक नंबर ज़्यादा मिल जाएगा और आधा एक नंबर के मार्जिन से ही हर क्वेश्चन में यू विल गेट सक्सीड इन द एग्जाम. अब लिखो इस पे एक पॉइंट. इन एग्जामिनिंग वेदर अ सूट इज ऑफ ए सिविल नेचर और नॉट, one has to examine the cause of action and if only a civil legal right is involved. हालांकि ये बात आप पहले लिख चुके हो. And if only a civil legal right is involved, then it is a pure civil suit. But if some other issues are also involved, you understand the other issues, social or religious. But if some other issues are also involved, then the examination will be as to which is the dominant issue. As to which is the dominant issue, legal or the social or religious issue. Which is the dominant issue, legal one or the social or religious issue. If the former is the dominant issue, it will be a suit of civil nature. If the former is the dominant issue, it will be still a suit of civil nature. It will still be a suit of civil nature. Now there are certain examples that we have to discuss upon it, whether they are civil nature or not. Certain examples we have to discuss that we would do in next lecture. That's it for this lecture. Thank you.